Assalamu alaikum and welcome back to the Aleph podcast 2024 edition. आज मेरे साथ हैं Junaid Khan, formerly, well, off call, not formally, I guess, and now more known as a TV personality, actor, etc. कैसे हैं आप? I'm बिल्कुल ठीक ठाक. कैसे हो? Pleasure to have you here. Thanks. Same here, man. Same here. क्या कहते हैं? So I guess as I mentioned, थोड़ा हमारा एक format है where we start with. Because mostly we bring musicians here and हर एक की एक story होती है कि कहाँ से music का शौक पैदा हुआ. तो what was your first memory of getting into it? Oh, well, have to go way back. Yeah. जो मुझे कुछ याद पड़ता है. Live shows actually inspired me. Yeah. I think when I was exposed to live music, then I got inspired. Music listening मेरी उससे पहले very limited थी. Back in the day, I think we were listening to mostly Indian stuff. Yeah. So वो तो चलता ही रहता था, you know. But I think I was very much inspired when I saw live shows in Pakistan. तो कौन से bands उस वक्त आपको याद? उस वक्त Vital Signs था, जुनून था. Of course. उनके मैंने gigs देखे. And the Alhambra Open Air Theatre, जो लाहौर का है. Yeah. So you grew up in Lahore? Yes. So I was inspired there, that venue. Yeah. Alhambra Open Air Theatre. मुझे अभी भी वो याद है. That grand venue, पूरा एक theatre है जिसके बीच में एक बड़ा सा stage है. And जो stage पे खड़ा होता था, जो audience होती थी वो समझती है कि यार this is the ruler of the world. This guy rules the place because the command or the grandeur that venue has. Yeah. So I saw Vital Signs performing there. I was like, okay. I saw Junoon performing there. I was like, wow. Oh my God. Yeah. This is what a live performance is when you talk. Because Ali Azmat really owned the stage as well. Yes. His personality. Ali, the whole and band, Salman, the music. Whole band, बिल्कुल. The whole structure of the show, जैसे वो बैंक से शुरू कर किया म्यूजिक एकदम बजाते हुए अंतर आए और बैंक से शुरू किया और बजी जा रहा है कोई ब्रेक नहीं आ रहा है बीच में and you just going high और peak पे you go crazy at the end of the day end पे आप जनाब leaving on a very hungry note कि my God when is it gonna happen next kind of. It was classic. Yeah. So वो मैंने shows देखे. Then I was exposed to the Lahore underground scene. Back in the day around 2000 year 2000 अंडरग्राउंड सीन लाहौर में बहुत स्ट्रांग हो चुका था और बहुत से अंडरग्राउंड बैंड्स जो कि पिंक फ्लॉयड बजाते थे, मेटालिका बजाते थे, निर्वाणा बजाते थे, पर्ल जैम बजाते थे, वो मैंने देखे. That's where I was inspired. I was like if I want to be something, if I want to express myself, I want to express myself in that like that form, like that guy. Yeah. This guy can let his heart out. Yeah. और ये अपनी मर्जी की बात कर जाता है और I was like, yeah, मैंने लाइव शोज करने हैं. So वहाँ से म्यूजिक का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं डिफेंस में लाहौर में डिफेंस में घर है वहाँ पे रहते थे. So जो मेरे ऊपर रहता था this guy, he was a guitar player. अच्छा. मैं तो गिटार से एक्सपोज भी नहीं था, मुझे आसपास भी नहीं था गिटार because no one in my family owned a guitar, was from this business anyway. So he had a guitar. So वो आता था और वो बजाता था, but he was exposed to mainly Western music. वो पर्ल जैम बजाता था और इस टाइप के सारे पिंक फ्लॉयड बजाता था. वो गाता नहीं था. So वो मेरे पास आ जाता था कि चलो जैम करते हैं. तू गाए मैं बजाऊंगा तू गा. So वो बजाता था तो वो उस किस्म के म्यूजिक बजाता था. मैं इंडियन म्यूजिक से एक्सपोज था या पाकिस्तानी म्यूजिक था मेरे पास. So फिर उसने मुझे थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक से मेरी फेमिलियरिटी शुरू हुई. वहाँ से मुझे सुनना, उसने मुझे बताया ये पर्ल जैम है फिर मैं सुनना शुरू. फिर मैंने दुनिया खुली मेरे पास म्यूजिक की. वाज लाइक ओके ये भी म्यूजिक है दुनिया में. फिर आई स्टार्टेड डूइंग दोस. फिर ब्रायन एडम्स भी मैं सुना हुआ था लेकिन फिर वो भी मैंने सुना. पर्ल जैम सुना, एडी वेडर वो मुझे बहुत पसंद आया. लाइक दिस काइंड ऑफ इसकी आवाज़ मुझसे मिलना भी शुरू हो गई एक तरह से. मैं वो जब पर्ल जैम के गाने गाता था तो बहुत कन्विंसिंगली गा रहा होता था. तो वहाँ से बजाना शुरू हुआ, गाना शुरू हुआ. एक
कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि ओके दिस ये चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया. मेरे जो अंदर की जो दिल के गुबार था हल्का होना शुरू हो गया. आई वाज फीलिंग लाइटर. आई वाज फीलिंग दैट आई वाज आई हैव अ वॉइस. Not just a voice like a गाने की voice, like voice in terms of internal voice. I could express myself somehow. So I was getting, मुझे बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया उस चीज़ में. Then university का I think third year था when I met a couple of people. दो भाई थे, उस्मान और सनी, who were initial band members of Call later on. वो मुझे मिले जो कि म्यूज़िक बजाते भी थे, गिटार बजाते थे. तो they said कि चलो हम बैठ के जाम करते हैं, हमारे घर में जाम करते हैं. घर में जाम करना शुरू हो गए. फिर उसकी छोटी मोटी गैदरिंग्स होती थी, वहाँ पे जाम करना शुरू हो गया. हमें इंटरनली एक अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो गई कि यार ये तो बड़ा अच्छा बजाते हैं, बड़ा अच्छा गाता है. पाकिस्तानी भी गाने कर लेते होते थे, स्ट्रिंग्स के गाने भी कर लिए, जुनूनी गाने कर लिए, इंग्लिश गाने कर लिए. क्रीड बैंड आया था नया, उस वक्त क्रीड के गाने शुरू कर दिए. बिल्कुल, and that was kind of similar in the voice to the voice texture of Pearl Jam का भी था. मेरे से मिलना भी शुरू हो गया. So फिर वहाँ से फिर मेरे एक सर्कल में एक मेरी उठना शुरू हो गया आवाज़ को, दिस गाय इज़ न्यू. देन अ कपल ऑफ पीपल आस्क्ड मी क्या हमारे बैंड का हिस्सा बन जाते हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर ले, हम डुओ बना लेते हैं, हम म्यूज़िक वीडियोस बनाएंगे. एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट. मुझे वो चीज़ समझ इसलिए नहीं आई बिकॉज वो जॉनरा बिल्कुल भी, बिकॉज मैं रॉक में बहुत घुस चुका था उस वक्त. वो रॉक जॉनरा नहीं था, बड़ा कमर्शियली मेन स्ट्रीम जॉनरा था. मैंने कहा यार ये मुझे नहीं समझ आ रहा. दूसरा, मैं कोई डुओ नहीं बनाना, मुझे 2 पीस बैंड नहीं बनाना, मुझे प्रॉपर बैंड के साथ प्ले करना है, मुझे लाइव म्यूज़िक प्ले करना है. मुझे म्यूज़िक वीडियोस का कोई शौक नहीं था, मुझे पॉपुलैरिटी का कोई शौक नहीं था, मुझे बस स्टेज पे खड़ा होकर गाना था. दैट्स इट. तो फिर मुझे एक दिन फ़ोन आया, लैंडलाइन का ज़माना था, मुझे फ़ोन आया. कॉल बैंड था अंडरग्राउंड का, मैंने सुना हुआ था उनको एक अंडरग्राउंड शो में मैंने सुना हुआ था कॉल को, पुराने कॉल की लाइनअप फ़र्क थी. उसमें खुरम, जब जुल्फ़ी के बड़ा भाई खुरम जब्बार, दानिश जब्बार, शहजाद हमीद, एहसन फिदा गिटारिस्ट थे. सो सारा बैंड था. वो बैंड डिसबैंड हो चुका था. उसके बाद फिर खुरम वाज इन द US, खुरम भाई, एंड ही केम बैक टू पाकिस्तान, एंड देन ही स्टार्टेड टू दोबारा से कॉल को शुरू करना चाह रहे थे और मेक अ न्यू बैंड व्हाटएवर. So then he was looking for a vocalist. So खुरम भाई and पहले जो गिटारिस्ट थे कॉल के, एहसन फिदा, और एक और बेस प्लेयर था फैसल, आई गेस. they were looking for a vocalist. तो मुझे फिर किसी के रेफरेंस के थ्रू मुझे फ़ोन आया कि हमें वोकलिस्ट की ज़रूरत है और हमने आपका नाम आपको पता चला है, तो why don't you come down and see us. पूछा कि आपका म्यूज़िकल इंटरेस्ट क्या है. इट्स लाइक मैं ये करता हूँ, इनक्यूबेस, स्टेन्ड, ये इस टाइप के जो कमर्शियल रॉक म्यूज़िक चल रहा था उस वक्त. अच्छा, दे वर मोर इनटू क्लासिक बैक. वो क्लासिक म्यूजिक पे चल रहे थे उससे 10-15-20 साल पहले. एग्जैक्टली, वो क्लासिक पे चल रहे थे. डीप पर्पल, दे लाइक, ही इज लाइक, डू यू नो डीप पर्पल? आई लाइक, आई डोंट नो बट आई चेक इट आउट. मैंने सुना थोड़ा सा, मुझे नहीं, मेरा इंटरेस्ट का नहीं था बिकॉज आई वांट मोर इनटू प्रोग्रेसिव अल्टरनेटिव रॉक. सो I went there, I met them. जुल्फी भी बैठा हुआ था, जुल्फी भी छोटा था उस वक्त. And I think उस वक्त Battle of the Bands हो चुका था and EP was pretty much in the scene. So खुरम भाई asked me कि अच्छा Deep Purple आता है? मैंने कहा Deep Purple तो नहीं आता. अच्छा ओके, मैंने कहा क्या आता है? मैंने कहा ये आता है, Creed आता है और Stained आता है और ये आता है. So अच्छा Creed का गाना सुना था. I think With Arms Wide Open था, वो मैंने सुना दिया. And they liked it. They were like, okay, this is something new and we haven't heard this before. So let's do this. अब हम यही करेंगे. I said, okay, fine. So उस वक्त basically the band was focusing on doing covers. The band was बिल्कुल. But I think with what खुरम भाई at that point, उनका ये विजन था कि we have to make this commercial somehow and we have to make originals. We can't just do covers. I was like, yes, why not? Because underground scene में वही हो रहा था ना, covers, English covers. हाँ, हो रहे थे. So I was like, yes, why not? हम ओरिजिनल म्यूजिक पे काम करते हैं बिकॉज आइडियाज तो थे बहुत. आई थिंक देन वी स्टार्टेड जैमिंग एट हिज प्लेस. छोटा जैम रूम था और वहाँ पे कमरा था और वहाँ पे ड्रम किट थी और हम पटाख कान फट रहे होते थे हमारे. कान फटते थे लेकिन बस
बजाना है, साउंड ट्रीटमेंट का भी किसी को कुछ नहीं था लिटरली वो नॉइज होती थी, टी फीडबैक्स और कान फट रहे हैं और एंड पे चौं, जब जैम खत्म होता चौं की आवाज़ आ रही होती थी कान में। तो बट वहाँ पे हमने बैठ के फिर गाने बनाए और मेरे साथ जो मेरे जो दोस्त थे उस्मान और फारूक, बिकॉज कॉल के जो पुराने बैंड मेम्बर्स थे वो फिर छोड़ गए बिकॉज उनको मॉडर्न प्रोग्रेसिव साउंड समझ नहीं आती थी, सो दे वी कांट कंटिन्यू, सो दे लेफ्ट। सो फिर मैं अपने जो मेरे साथ जो बॉयज़ थे उस्मान और सनी, दो भाई, आई थिंक मैं उनको लेके आ गया। सुल्तान वॉज जुल्फीज गिटार स्टूडेंट बैक देन, तो खुरम भाई ने कहा कि ये गिटार स्टूडेंट है सुल्तान जुल्फी का, ये बेस बजा लेगा because he can play bass as well. I was like, oh fine, let's do this. So I think we made a 5-piece band and then we composed Nishaan. Nishaan was our first track and then we music channel शुरू हो चुके थे, इंडस म्यूजिक था उस ज़माने में, और इंडस म्यूजिक में हमने फिर निशान को परफॉर्म किया, रिकॉर्डेड वर्जन नॉट लाइव, रिकॉर्डेड वर्जन परफॉर्म किया और ट्रैक एक्चुअली वेंट वायरल ऑन यूट्यूब। I remember that. I was like, ये नया बैंड आया है, निशान, साउंड फर्क है, ये आवाज़ फ़र्क है और ये क्या है, vocalist sounds like Creed guy. so वो हो गया। फिर उसके बाद हम अंडरग्राउंड तो शोज़ कर ही रहे थे, हमने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, but then the track actually हर तरह फैल गया, फिर हम we were everywhere, हर जगह परफॉर्म कर रहे थे। But yeah, my first gig था जब हम जैम कर रहे थे, और थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ दोबारा से। मुझे स्टेज का कोई आइडिया नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो खुरम भाई सेड के ये जुल्फी का एक गिग हो रहा है ईपी का, तो वहाँ पे व्हाई डोंट यू डू अ स्मॉल अपीयरेंस, क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर में, ऑल गर्ल्स। अच्छा। सो ऐसा है कि वहाँ पे क्यों नहीं तुम एक अपीयरेंस कर दो, जुल्फी विल प्ले अ ट्रैक अनप्लग्ड एंड यू सिंग। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो उस वक्त फिर मैंने इस तरह ही 2 गाने किए थे, आई गेस मे बी विदाउट वेयर ओपन किया होगा, एक्सटेंड का आउटसाइड किया होगा, 2 tracks I did. That was something that was very uplifting for me, because उससे पहले मैंने ऑडियंस फेस नहीं की हुई थी लाइव, छोटी मोटी घरों में तो की हुई थी, लेकिन प्रॉपर स्टेज ऑडियंस नहीं फेस की हुई थी। और वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ लाइव ऑडियंस से रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। That was good for my confidence actually. फिर उसके बाद तो फिर we went crazy, फिर तो हम परफॉर्म हर जगह करना शुरू किया, राइट लेफ्ट सेंटर and finally when I performed in Alhambra Open Air Theatre, I think that's what I was complete. I was complete back then, because audience के perspective से देखना हमें feel होता था, और जब हम खुद एक performer के तौर पे, as performer के तौर पे जब मैंने perform किया उस venue में, I was like blown away. I was like wow, ये venue है, special place. ये is a venue, because वाकई आपको जो हम देखते थे कि यार ये बिल्कुल किंग लग रहा है बेटा और परफॉर्म करता है, आई वुड फील लाइक अ किंग, कि वाइड ऑडियंस और साउंड की जो एक आपको जो स्लैप बैक भी आता है वो इतना कैलकुलेटेड आता है। आई डोंट नो हाउ दे डिजाइन दैट प्लेस, बट सच अ वंडरफुल वेन्यू। सो वहाँ पे जब मैं परफॉर्म किया, पहला गिग था, हमने कवर्स ही किए 2-3 और एक ओरिजिनल किया था, हमने गलतियाँ की हमने वहाँ पे, बट आई हैड अ ब्लास्ट, आई हैड अ ग्रेट टाइम। आई थिंक वहाँ पे आई वाज complete, okay fine, ये मैं that's how where I wanted to be, and I made it. That's awesome. I mean, in this process, like getting to that point, like you mentioned, obviously earlier you had some nerves about going on stage and stuff. So, and now the Junaid Khan we all know is super confident, is a performer. So wo, like, was it ke once you were on stage or ek dafa nerves 1-2 shows ke baad ud gayi, or it was a slower process like that? Of growing into that personality. बिल्कुल होता है। I think वो that personality was in there somewhere. And it comes out on stage only. Yes. Even when people who've seen me otherwise, they would say कि यार he's entirely a different person. But that's why I guess that's what my internal alter ego is somehow. Somebody who's just wild and crazy on stage. And वो चीज़ I think वो आ जाती है once एक गाना बजना शुरू हो जाता है, and that वो चीज़ एकदम आ जाती है, and then it's तो पता भी नहीं चलता, पूरा कॉन्सेप्ट बच जाता है, एंड में पता चलता है। So yeah. So then निशान के बाद जो पहली एल्बम आप लोगों ने की, फिर वो
immediately then you got working on the rest of the songs, or या थोड़ा उसमें it was a उसमें टाइम लगा me and Farooq Sunny जो पहला बैंड मेंबर था, I think we worked on the album, composing the album. हमने सोच लिया था कि हमने एल्बम कंप्लीट करनी है. I think 70% we completed the album. I think उस वक्त फिर Farooq had to make a decision. He had to move out of city for work reasons because he was working. Yeah. And he had to move out of city. So I think that's when he decided to let go of the band. Yeah. So we were short of guitarists. And you weren't like doing any other job at that time? मैं कर रहा था लेकिन I was working in Lahore. अच्छा. So इसलिए मैं लाहौर में था, मैं कर रहा था, लेकिन he had to move to Islamabad for work reasons, and so both the brothers had to exit the band, and then we were left with like, okay, the void कि guitarist नहीं है हमारे पास. Yeah. Simultaneously, EP were having internal issues back then. Or Zulfi was also probably looking for an exit, or maybe he maybe disband हो रहा था EP. Yeah. So that's when Khurram bhai suggested कि why don't we put in Zulfi? I was like, why not? He's an established guitarist. He's a wonderful musician. Composer, he's a producer as well, because he was already producing the album. Yeah. वो album produce भी कर रहा था हमारे साथ. He was contributing a lot in terms of album productions, in terms of compositions. He was already there. I thought, this is the right choice. Why not? Of course. So EP, I think EP disbanded, and then Zulfi came to call. Zulfi भी आया, फिर वकार भी आ गया. वकार भी, because वकार was a wonderful drummer. Yeah. And खुरम भाई said कि यार मैं अब थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, so अब मैं थोड़ा सा retirement लूँगा. I'll be more towards management, and then वकार should play the drums. That's like perfect. ये तो इससे बेहतर तो combination में नहीं सकता. So I think that was the best lineup that we, in terms of band, best lineup थी हमारी. और फिर हमने एल्बम कंप्लीट की. जो बाकी जो 30% रहती थी वो हमने कंपोज की, कंप्लीट की, रिकॉर्ड की, एंड देन रिलीज़ की हमने. फिर हमने उससे पहले हमने पुकार भी गाना रिलीज़ हो चुका था. बट इस लाइनअप के साथ फिर हमने सबुला के रिलीज़ किया, शायद रिलीज़ किया. मैं ये शायद लगता है कि फाइनल फुल लाइनअप के साथ शायद रिलीज़ किया हमने. और शायद किया, सबुला की किया. गाना था कुछ नहीं, वो किया. सो आई थिंक फिर उसके बाद फिर कॉल 4 पीस में कन्वर्ट हो गया था. 4 पीस में कन्वर्ट हो गया था. फिर वकार हैड टू मूव आउट ऑफ द कंट्री. फिर वो भी उसने पढ़ाई के लिए ही हैड टू मूव आउट. तो फिर वकार मूव आउट कर गया. देन वी लेफ्ट विद 3, एंड वो 3 की लाइनअप ही अभी तक. तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस, हाउ मच डू यू रिमेंबर कि वो आई रिमेंबर किस तरह, लाइक तो क्योंकि we're a bit geeky here being studio people, तो क्या मतलब उस वक्त drums were sequenced या live drums किए थे? The first album was drum sequence थे सारे. वोकल भी मुझे याद है, वो छोटा कमरा था और उस वक्त साउंड प्रूफिंग भी नहीं होती थी. तो निशान तो मुझे याद है कि हमने किसी दीवार की कोने में खड़े हो गए ना, जहाँ से कब से कम हमें कोई स्लैप बैक मिले या कोई उस तरह मिले, वो खड़े होके हमने निशान रिकॉर्ड किया था एक सिंपल श्योर के माइक से. और sequence for drums were sequenced. Sequencing, Zulfi was doing the sequencing. Zulfi ने सारी जो arrangement, सारे tracks layout करना, सारी production Zulfi करता था. He was working alone back then. So वो किया. So बहुत basic पे हमने record किया था. But फिर शुरू में अब तो हमने ये try किया था, लेकिन I think जब जिलावतन complete हो रही थी तब Zulfi का एक studio proper develop हो गया था. और फिर हमने थोड़े better इक्विपमेंट पे, सब चीज़ों पे हमने एल्बम कंप्लीट की थी. जिलावतन पहली एल्बम जिलावतन हमने रिलीज़ की. हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. वी वर साइंड बाय एन इंडियन लेबल एज वेल. उन्होंने वी कॉल टू इंडिया. हमने वहाँ पे भी प्रमोशन की. MTV इंडिया के साथ, एसोसिएशन के साथ हमने प्रमोशन की. एक मेटल बैंड के हिसाब से, विच वॉज वेरी यूनिक फॉर देम एज वेल. बट व्हेन वी वेंट देयर हमें पता चला कि वहाँ भी बड़ा रॉक सीन है. और वो पाकिस्तानी रॉक के बड़े फैंस. एग्जैक्टली, बड़ा रॉक सीन है वहाँ पे. और वो बड़ा बेचारे, वो भी परेशान होते थे कि यार बॉलीवुड ने हमें दबाया हुआ है. So, but I think we were probably the first rock band who actually made it to MTV India, or maybe a mainstream platform there.
So yeah, I think Pakistan में तो rock scene develop हो ही चुका था because Call, Noori, EP were already there. Yeah. जिन्होंने ने rock के लिए बिछा दिए थे already. Yeah. Framework. Yeah. So, but they were still into very much Sufi, but we were like metal. Yeah. We came with metal. So metal sound पे हम ही थे. Yeah. So yeah. So how was the India experience? मतलब आप कितनी दफा like tour वोर भी उधर किया? Yeah, हमने shows भी किए वहाँ पे. हमने shows किए. ये लारी छुट्टी से पहले की बात कर रहा हूँ. लारी छुट्टी तो बाद में आया था. उससे पहले सब बुला के रिलीज हुआ था. अब ये शायद और इस टाइप पुकार रिलीज हो चुका था. You were talking like 2005. Yeah, exactly like back then. तो हमने दुबई में भी शोज किए. बॉम्बे में शो किया हमने जिसमें चैनल बी का एक बहुत बड़ा शो था जिसमें हमारे साथ एकॉन भी था. वहाँ का शान सिंगर भी था. पाकिस्तान से आतिफ भी था. रेत एक बैंड था पाकिस्तान से वो भी था. कैलाश खेर भी था. अच्छा. इतने बैंड्स होते थे उस वक्त. सो बड़ी लाइनअप थी और वहाँ पे हमने मैं जुल्फी सुल्तान वकार भी था. तो इंटरेस्टिंग शो था बड़ा वो. इंटरेस्टिंग शो ये था कि वो हमने इन ईयर मॉनिटरिंग नहीं की हुई थी. मैंने नहीं की हुई थी. हम पता नहीं था इन ईयर मॉनिटरिंग क्या होती है. इट वाज ह्यूज रैम्प. स्टेज था. स्टेज का ह्यूज रैम्प था. आगे तक जा रहा था. तो मैं गाना बजाते साउंड चेक किया था हमने लेकिन वो इधर खड़े होकर किया था. तो गाना बजाते आगे निकल रहा हूँ और मैं लदा बीट पे जा रहा हूँ और वो बाकी बैंड डिले से आ रहा है. वो डिले से आ रहा है कि हो क्या रहा है. बाद में समझ आई कि इन ईयर मॉनिटरिंग होनी चाहिए. तो लाइक वो एक बीच में ब्लंडर मारा लेकिन पीछे ही खड़ा हो गया मैं. आगे नहीं आया. तो या इस तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई शुरू में. टिल बट वी वर ऑल ग्रोइंग. आई थिंक हम साथ में ग्रो कर रहे थे. एज अ म्यूजिशियन हम ग्रो करते. बट वी हैड अ ग्रेट टाइम. We had a great time touring, traveling. It's a different experience altogether. And then like it was about I think 2011 में you released the second album. मतलब थोड़ा सा गैप था. 5-6 साल का गैप है. बिल्कुल. हमारा हम I think we never released the album for the sake of releasing an album. हम जब गाने कंप्लीट करते थे जब हम सोचते थे कि ओके नाउ हमारे पास एक 7-8 गानों की लाइब्रेरी हो चुकी है. फिर हम एक कंपाइल करके एल्बम रिलीज करते थे. क्योंकि हम हर गाने को because every song was important for us and we understood कि एक सीडी रिलीज होती है उसमें शुरू के 2-3 गाने सुनते हैं लोग. जो आखिरी एक साइड का आखिरी गाना होता है वो हमेशा इग्नोर होता है. बिल्कुल. आखिरी सारे गाने इग्नोर होते हैं. तो इसलिए हम ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि हम गानों को प्रॉपर फोकस देंगे. हर गाने की म्यूजिक वीडियो पे काम करेंगे. और बिकॉज एवरी सॉन्ग वाज डियर टू अस. सो इनफैक्ट आई रिमेंबर ईपी के एल्बम पे जो आखिरी में आगोश और बरज़ख टाइप मेरे फेवरेट वही थे. जो लोगों ने नहीं सुने हुए थे. एग्जैक्टली. हाँ क्योंकि वही बात है ना हम एल्बम में वो इग्नोर हो जाते हैं जब आप रिलीज करते हैं. एंड शायद कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बैंड्स भी अपने ज़्यादा जो मुश्किल या लंबे गाने हैं वो फिर एंड में डाल देते हैं. आसान गाने शुरू में डाल. ज़्यादा कमर्शियल आई थिंक पॉपुलर गाने जो हो चुके होते हैं वो शुरू में चले जाते हैं और जो थोड़े सुतेले होते हैं तो ऑडियंस भी वो समझ लेती है ना कि सुतेला गाना इसलिए एंड पे होगा तो इसलिए वो भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता. बट हमने था कि हमने गाने को सुतेला नहीं करना. हमने हमारा ये भी गाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो इसलिए हम गानों को रिलीज करते थे स्लोली एंड ग्रेजुअली. एंड देन जब 7-8 गाने हो जाते थे रिलीज फिर हम 2 नए 3 गानों के साथ एल्बम compile करके release करते थे. So during this process did you still have like what was your day job and at what point did you stop doing that? I was doing my day job. I think 2004 I completed my engineering and since उसके बाद से I was doing my day jobs. I was doing my masters as well. Masters भी करता था और फिर उसके बाद फिर मैं शाम में रात को जैम में चला जाता था. सो घर वाले बोलते थे यार कि सारा दिन तो बिजी रहता है. सुबह पढ़ाई की दोपहर में फिर शाम में फिर MBA की क्लासेस किया फिर रात को जैम में चला गया. बट आई वाज पैशनेट एंड मुझे तो वो 10 साल पता ही नहीं चले कि गए कहाँ. बिकॉज शोज वीकेंड पे शो होते थे और रात को हम जैम कर रहे होते थे. और शोज से लाइक डिड यू गाइस मेक इनफ मनी और उस वक्त भी एक pocket money type चीज थी? नहीं, I think Call were pretty much became mainstream. Yeah. So we were getting good gigs. Yeah. और हम कर रहे थे. इतना कर रहे थे कि I was really supporting myself. चाहे वो education हो कुछ भी हो. Yeah.
I was supporting myself. So, so yes, I think at that point, उस ज़माने के लिहाज से it was good money. So हाँ, हम तो हमने परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी यार. Every weekend we were here there. चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान में हर जगह शोज़ हो रहे थे. इंटरनेशनल टूरिंग भी फिर शुरू हुई. वो भी जगल हो रही थी विद जॉब. बट आई थिंक जॉब मैंने छोड़ी जब आई गॉट इनटू एक्टिंग. म्यूजिक में आई कुड मैनेज इट. Gonna get to that. म्यूजिक में आई कुड मैनेज बिकॉज वीकेंड पे शोज होते थे और इंटरनेशनल टूर होता भी था तो आई कुड जस्ट टेक एनुअल लीव्स एंड जस्ट गो. Yeah. So at that point, like, at what point did you think, or who के acting भी हो सकती है, like, so someone offered you something, यार जिससे ये window खुली? बिकॉज मुझे स्टेज या परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक था उस तरह. मेरा थिएटर में इंटरेस्ट था. और मैंने यूनिवर्सिटी लेवल में कुछ थिएटर प्ले में कंट्रीब्यूट भी किया था. अच्छा, so you weren't completely new to it. I wasn't completely new, but TV के लिए I was very new. Theatre still बिल्कुल. I could relate to it being on stage because दोनों stage type की performances ही हैं. Yeah. TV was different, but I think I don't know 2010. One of my friends, Jawad Bashir, Lahore के directors, he offered me a play in Lahore. He's like, ये लाहौर में हो रहा है, ये musician की कहानी है. और उस वक्त मेरा गाना आया था हो जाने दे. एंड दैट नीडेड सम एक्टिंग स्किल्स. तो ही सेड कि यार मैंने तेरा देखा है, वो गाना देखा, उस गाने की वीडियो देखी है, तो मुझे लगता है तेरे अंदर कीड़ा कोई है एक्टिंग का. सो व्हाई डोंट वी ट्राई दिस आउट. आई वाज लाइक अच्छा ओके. कैरेक्टर क्या? ही सेड कि म्यूजिशियन का कैरेक्टर है, एक बैंड की कहानी है, सिंपल सी कहानी है. So the easiest segue that you could possibly get. Yeah, exactly. So बैंड की कहानी है और चैनल हम टीवी है. हम टीवी was a mainstream channel back then as well. So he said कि लाहौर में होगा तो कर लेते हैं. It's like okay, ठीक है. तो फिर मैं लाहौर में उसको टेस्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें घुसा. फिर मुझे वो ड्रामा आना शुरू हुआ तो हम टीवी में मेरी अवेयरनेस आना शुरू हो गई थी. दे कुड सी दैट ओके दिस गाय कैन एक्ट एज वेल. सो वहाँ से मुझे ऑफर्स आना शुरू हो गई थी कि जी आप कराची आ जाएं. अच्छा. बिकॉज इंडस्ट्री हैड ऑलरेडी मूव टू कराची. या टीवी पर लॉलीवुड वाज डन. And Karachi की जो TV industry was actually booming. So they said कि just why don't you come here? I was like if I get a substantial kind of a character, it was like a main meaty character, I would come. So फिर उन्होंने मुझे offer किया एक बड़ा character and said कि okay fine now just come. So then I actually wrapped up my day job and I said कि okay let's just take this step. And I packed my bags and went to Karachi. And फिर and by this time call was still active या थोड़ा ठंडा हो गया? Call had already disbanded. अच्छा. I think थोड़े कुछ टाइम पहले I think we were having certain issues back then और वो issues थोड़े से बढ़ चुके थे. इतना बढ़ चुके थे कि we thought कि हमारी personal sanity के लिए ये ज़रूरी है that we actually take a break. So we took a break और फिर उसके बाद मैं कुछ सोलो ट्रैक्स मैंने रिलीज़ किए. कह दो एक ट्रैक था मेरा, वो रिलीज़ किया. कोई रोके मुझे एक ट्रैक था मेरा, वो रिलीज़ किया. सो आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद म्यूजिक. कह दो वाज a light track. कोई रोके was a pure metal track which I composed and wrote myself. मेरा जैसे मेटल ही निकलता था. Who did you work with for those? Who did you work with? कह दो was produced by समी खान, लाहौर का प्रोड्यूसर है. Kehdo was written by him. Koi Roke Mujhe was written and composed by myself. Produced by Umair Nadeem. The shredder. Yeah, shredder. He was the right guy for the job right now because जो मेरी composition थी was actually tailor made for this guy. कि यही करेगा and he did a wonderful job. वो किया रिलीज. फिर एक गाना मैंने एक और गाना था जो कि मेरा एक रॉक बैलेड था which was a duet with me and एक दोस्त है मेरी जेनिफर, अमेरिकन कंट्री सिंगर. शी इज़ अ कंट्री सिंगर. अच्छा. सो वो आया ट्रैक, वो मैंने रिलीज़ किया So Close So Distant के नाम से. So I was experimenting right left center because I didn't want to limit myself कि ये करना है ये नहीं करना. So I think acting शुरू हो चुकी थी और म्यूजिक में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था by that time. So then what would, like, you know, both acting and music are
वही ना फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. तो जो स्टेज पे एज अ म्यूजिशियन आपको आके एक अंदर की एक कॉन्फिडेंस मिली और एक आउटलेट मिला, हाउ वुड यू कंपेयर दैट टू द एक्टिंग एक्सपीरियंस? It was different. I was not aware कि टेलीविज़न मीडियम की क्या ऑडियंस है. और मेरा पहला प्रोजेक्ट जब आया टीवी का, तो मुझे बहुत ही डिफरेंट एक कैटेगरी ऑफ ऑडियंस स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. Younger kids were there, बच्चे, बड़ी audience. Housewives, and all these people. Rock audience was very younger audience, very still थी, but was still a niche. It wasn't mass. But TV की audience बड़ी mass appeal थी. फिर मुझे वहाँ पे जब मैंने काम किया, I was liking it. I was playing a totally different character. एक तरफ एक बदमाश बनना है, एक तरफ ये करना है, एक तरफ बहुत रोमांटिक आदमी बनना है. I was expressing myself through different characters, and I was liking it. तो वो चीज़ शुरू हो चुकी थी. But वही बात है, audience जो थी was a totally different audience. जो मेरी म्यूजिक की ऑडियंस थी वो थोड़ा परेशान हो गए थे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या है. He's this guy on stage and then he's just playing domesticated characters on. Confused हो सकते हैं ना कुछ fans भी. There was a huge divide. There still is. Yeah. क्योंकि लोगों ने फिर मुझे टेलीविजन में पसंद करना शुरू कर दिया. They start liking what I do on TV, and then they could not relate to what I was on stage. Like when they were exposed to my music, ये क्या है? ये कौन है? ये तो we like this guy is on TV. He's a nice guy. ये बड़ा सोबर सा आदमी है. ये बड़ा नाइसली तैयार होता है, बाल इसके सीधे से बने हुए हैं. And then who is this guy जो कि बाल खड़े किए हैं, जो आंखों में कभी कभार सुरमा लगा लेता है, and he's going crazy, चीखा मार रहा है स्टेज पे. ये कौन आदमी है? We don't like this guy. और जो म्यूजिक वाली ऑडियंस थी, कहते ये कौन सा आदमी है? ज़रा एक domesticated सा, एक subtle सा, boring सा आदमी है. तो there was a huge divide. There still is. Did that affect you at all? कि people being confused about what you're portraying? It didn't affect me as such because मैं इस फील्ड में कोई brand building के लिए नहीं आया था. Like if I was thinking like a brand, I was like, okay, मुझे लोग किस में पसंद करते हैं टीवी में, okay, I should focus on TV more. I should just totally finish this side, because then this is a clash to what that is. But मैं business decision के तौर पे ले नहीं रहा था इस फील्ड को. I was taking this as more of an artistic outlet for myself. So मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि ये ऑडियंस क्या सोच रही है, ये ऑडियंस क्या सोच रही है. मुझे था कि okay, I like expressing myself as a musician, I'll do that. And I like expressing myself as an actor, I'll do that too. So the audience was not driving my career moves because मैं brand या business point of view से नहीं सोच रहा था. Business point of view से सोचता, then I would have taken a step कि music को ख़त्म कर देते हैं. हाँ, and that's a really good point, because मैं भी लोगों से यही कहता रहता हूँ, you should follow what you want to do, because otherwise you'll just be limiting yourself and you won't discover आप में potential क्या है. Yeah, exactly. I've seen artists who have actually totally removed music from their profile because they realized कि okay, that is going to be a clash with my TV persona. So उन्होंने music ख़त्म कर दिया. कुछ लोगों ने music continue रखा because they thought कि oh, this is going to enhance their persona. But both of them are still business decisions. और मैंने business के तौर पे सोचा ही नहीं था इस फील्ड को. अभी भी नहीं सोचता. बिल्कुल. अभी भी I keep on making stupid career moves. कुछ ऐसी चीज़ें कर लेता हूँ जो कि शायद कोई अगर business point of view सोचेगा कि ये नहीं करना चाहिए इसको. But I still do it because मुझे continuously express करना है, मुझे काम करना है, because I like doing it. So I don't want to limit myself. So what's been a character that you've played that really helped you discover something new in your personality or in your repertoire? I don't know. I think I'm constant. It's a constant journey. I play a different guy every day in front of the camera, and I am exploring something totally different every day. But does that ever bring any sort of questions to yourself कि मैं कौन हूँ, हर रोज मैं ये बन रहा हूँ, वो बन रहा हूँ, ये बन रहा हूँ? No, I think I never went into that identity crisis. No, because I never brought those characters home. I think I make a point that I flush them out
और मैं जब शूट से गाड़ी में जा बैठ रहा हूँ तो टोटली नो मेथड एक्टिंग नॉट एट ऑल. मैं वही बात है ना कि मैं वही बात है कि बिजनेस के तौर पे नहीं लेता मैं इस फील्ड को ना. एंड इफ मेथड एक्टिंग से that would disturb my sanity. Yeah, and probably your family life. Yeah, of course, my sanity, my mental space will be disturbed. Yeah. अगर तो मैं बहुत ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा कि यार मुझे कोई नेक्स्ट लेवल एक्टर बनना है या मुझे बहुत ज़्यादा कमाल दिखाने लोगों को मैं कमाल, देन येस आई वुड गो फॉर मेथड एक्टिंग. तो मैं अपनी पर्सनल सैनिटी भी खराब करूंगा, मेंटली अपने आप को स्टेबल भी करूंगा और मैं टोटली कैरेक्टर में घुस जाऊंगा. बट आई वुड रादर ट्राई टू डू इट कीपिंग माई मेंटल सैनिटी इंटैक्ट. Because I mean, it's the most important thing. Because it is my artistic expression. I don't want to lose my sanity in the process. Yeah. So I like to keep it safe to a level ke I don't bring them home. I try to the intensity that I give. I try to give it as much in front of the camera. Yeah. But I don't take that home. Bring that home. So and well, since the time you got into television serials and stuff till now, what's the changes that you've seen? Because obviously the internet has taken over as opposed to just TV, and audience और भी उससे expand हुई होगी. But in terms of the scripts and the kind of characters you're getting, are you seeing new things and exploring new areas? In terms of acting? Or in terms of just general storylines, because typical जो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल एक टेम्पलेट था काफ़ी अरसे तक. Still pretty much there, still the same. टीवी ऑडियंस जो है हम हमेशा सोचते हैं कि यार शायद ये जो राना तमिल फॉर्मूला है कंटेंट का सास बहू वाला इसका ना इवेंचुअली फेड, बट नो स्टिल प्रीटी मच देयर. मेजॉरिटी तो इसी में लिव कर रही है ना. या एग्जैक्टली. और हम ये सोचते हैं कि ओके नहीं शायद ये एक पर्टिकुलर क्लास है जो कि शायद फॉलो करती है, बट नो every class is following it. Every category of people, चाहे वो elite है चाहे वो rural urban, हर class जो है वो relate करती है उस content से. It's very much relatable. It's easily digestible. Consume बड़े आराम से हो जाता है content. So that's pretty much there. वो चलेगा, वो चलता रहेगा. But उसके साथ और किस्म का content बनेगा, वो I pretty much see that happening. जो OTT platforms जितने आ रहे हैं और आ गए हैं, उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा कंटेंट डिफरेंट किस्म का बनना शुरू हो गया है. प्लस फिल्म ज़्यादा बननी शुरू हुई हैं वापस. फिल्म्स बननी शुरू हुई थी 8-10 साल पहले, फिर कम हो गई हैं. आई थिंक पोस्ट कोविड से पहले फिर भी बेहतर थे फिल्म के हालात, बट अब को पोस्ट कोविड अब आई थिंक एवरीबडी इज प्रीटी मच कोजी एट होम watching Netflix and Amazon. ये सब चीज़ें वो लोग घर में देख लेते हैं. So they would only go to the cinema watching something that's much bigger. या तो मार्वल होगा या डीसी होगा. मार्वल भी अब डाउन टर्न में चल रहा है. लेटेस्ट उसके 4-5 कोई किसी ने परवाह नहीं की. एग्जैक्टली. या कोई एवेंजर्स आ जाएगी तो ठीक है, या कोई सुपरमैन आ जाएगी, डीसी की कोई फिल्म बड़ी मेगा फिल्म आ जाएगी, बिकॉज अब उनको नॉर्मल एक्सपीरियंस उनको अब घर में मिल रहा है विद नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन. सो इसलिए फिल्म अब बनती है तो कोई बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर बनाएगा, मे बी अनदर मौलाजट पे आके लोग चले गए, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज अ फिल्म दैट वाज मच बिगर देन टीवी. So people made sure that they go to screens and they could watch it, and it was a film made for big screen. But not every movie is made for big screen. True. So पाकिस्तान में जो वैसे ऑलरेडी जो फिल्म फॉर्मूला है वो बहुत ही बेचारा फाइनेंशियल फॉर्मूला बहुत वीक है, बिकॉज ऑडियंस उस तरह आती भी नहीं है सिनेमा में. सो एक एवरेज फिल्म तो नहीं चलेगी, सो वो नहीं बनना बंद हो गया एवरेज फिल्म्स. सो अब वही फिल्म बनेगी जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा, जो बहुत बड़ी फिल्म होगी, जो कि बहुत कम बनेगी. सो पाकिस्तान में तो सिनेमा मीडियम अब बहुत ही थोड़ा सा struggling format. It's struggling, yes. So jumping a little bit back to, you mentioned कॉल के साथ आपने इंटरनेशनल टूर भी कुछ किया. उसमें से like what are some highlights, like playing abroad must have been, जैसे अलहमरा में बजाना is one thing, but then going out of Pakistan is a whole other game. Yeah. I think our first international gig was in Dubai. Global Village 2005 was बिल्कुल नया शुरू हुआ था. दुबई तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था उस वक्त, नया एक्सपैंड कर रहा था. ग्लोबल विलेज was भी बहुत इनिशियल वेन्यू था. सो ग्लोबल विलेज में हमने परफॉर्म किया और यहाँ से फराज अनवर भी गया था और भी बैंड्स गए थे. तो फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर, बिग ऑडियंस, बिग स्टेज. देन वी परफॉर्म्ड विद, जैसे मैंने वहाँ इंडिया में इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ किया, दुबई में हमने और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करना शुरू किया. वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था.
फिर हमने देन बिकॉज हमें उस पर फिर ज़्यादा इंटरनेशनली चीज़ों से टेक्निकलिटी के हिसाब से भी साउंड के लिहाज से भी स्टेज के लिहाज से मॉनिटरिंग एवरीथिंग मस्ट बी होल डिफरेंट लेवल. वो डिफरेंट लेवल. आई रिमेंबर हम ओस्लो में परफॉर्म किया, ओस्लो मेला में, और उसमें भी बहुत ही डिवर्स किस्म की ऑडियंस आती है. एंड वी वर हमारा बिल्कुल मेन इवेंट करे थे हम लास्ट डे को, थर्ड डे को. 3 दिन इवेंट होता है वो. और हम जो थर्ड डे का फाइनल फिनाले था हम कर रहे थे. हमारा साउंड चेक था और हम पूरा अपना इक्विपमेंट लेके गए हुए थे साउंड चेक पे. और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें घंटा लगेगा साउंड बनाने में. तो हम यहाँ पे हमें लगता है टाइम घंटा, और घंटे के बाद भी साउंड, सॉरी माइंड माई लैंग्वेज, बट सो वो हो जाती है. सो वो वहाँ पे हम स्टेज पे गए, गिटार्स लगे, वो माइक लगे, और हमने इन मॉनिटरिंग भी नहीं की हुई थी. और फिर भी आई वाज लाइक 15 मिनट में आई वाज लाइक कंफर्टेबल आवाज़ आ रही है हर जगह से. वोकल की आवाज़ इतनी कंफर्टेबल आ रही है, मुझे कोई इन मॉनिटर नहीं लगाना पड़ रहा. और गिटार्स इतने क्लियर साउंड कर रहे हैं, इतनी लार्ज साउंड कर रहे हैं. लाइक ये दुनिया में और है. हमने पूछा साउंड इंजीनियर से कि यार एवरीथिंग इज ओके. लाइक या एवरीथिंग इज ओके. क्या चाहिए, उसने पूछा हमसे क्या चाहिए. हमने कहा ये सब है. ठीक है, डस्टेड सेटिंग शूटिंग की वजह से चला गया, साउंड चेक किया. और यूजली हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस होता था कि साउंड होता था, साउंड चेक, और जब एक्चुअली ये शो का टाइम आता था तो साउंड बर्बाद हो चुकी थी. बट नहीं, साउंड वाज प्रीटी मच देयर. और यहाँ पे कॉन्सर्ट बजाते हुए इतना गला फट रहा होता था, बर्बाद हो जाता था. वहाँ पे आई वाज सो कंफर्टेबल ऑन स्टेज. एंड हम एंड पे भूल गए, आई थिंक ये हमारा कॉल के जो शोज थे कुछ उस जमाने में, हम एंड पे भूल जाते थे कि यार ऑडियंस क्या कर रही है. हम स्टेज पे खड़े होकर खुद एंजॉय कर रहे होते थे. That's when you're in that zone, then you know कि बस अच्छा है. हम जिलावतन पे पहुंचते थे, और जिलावतन पे तो हम यूज्ड टू फॉरगेट कि ऑडियंस मांग रही है, ये गाना सुनना चाह रही है, नहीं सुनना चाह रही है. We used to just go crazy on stage. Nice. So Call also had recent, मतलब not that recent anymore, but I think Sound Clash कब 2018 में हुआ था? Sound Clash, हाँ, हमने Sound Clash इंडिया में भी किया हुआ है. अच्छा, हमने Sound Clash इंडिया में किया था. The first Sound Clash that happened was us. पाकिस्तान से हम थे, और इंडिया से एक बैंड था, जैज बैंड. अच्छा, that was our first exposure to genre clash and sound clash. हाँ, वो था हमारा. हम बैंगलोर में we performed. So what year was this? Do you remember? This, I don't know, it was way back. I don't know, 2000. I don't know. 9, 11, it was 10, a Red Bull event. It was Red Bull. It was a Sound Clash Red Bull का था. और बैंगलोर में हमने किया था. We went there, और वही करना था, फ्यूजन था. हमने एक गाना, अपना गाना जैज में करना था, उन्होंने अपना गाना रॉक में करना था. फिर हमने एक देसी गाना. It was a fun format. Yeah. So हमने वो हमें एक्सपीरियंस किया था. मुझे ये भी याद है कि वो बैंगलोर में हमारा एक शो था जो अच्छी खासी ऑडियंस थी उसमें. एंड देन उसके बाद देयर वाज अ प्रॉपर मेटल गिग हैपनिंग इन बैंगलोर, जिसमें इंडिया के बड़े बड़े मेटल बैंड्स परफॉर्म कर रहे थे. और उसकी हाईलाइट थी कि देयर वाज एक बैंड था प्रियक्रमा करके, आई थिंक उसमें था. और उसकी हाईलाइट थी कि उसमें सैफ खान आके गेस्ट परफॉर्म करता है, रिदम गिटार बजाता है. सो हमने, हमारा शो खत्म हुआ, एंड वी जस्ट चेक इट आउट. वो शो हो रहा था अभी, उसके आखिरी 2-3 गाने चल रहे हैं, लेट्स गो. देयर वाज ह्यूज ऑडियंस थी. और सैफ खान ने कहा कि हम अब ये सैफ खान जो है ना, इस गाने के बाद चला जाएगा. हम परफॉर्म कर रहे हैं, बैंड सेट की भी परफॉर्मिंग, बट सैफ खान विल लीव आफ्टर दिस. तो वो गाना परफॉर्म किया, जैसे सैफ खान उतरा स्टेज से, ऑडियंस भी जाना शुरू हो गई. ऑडियंस भी जाना शुरू हो गई. So yeah. उसको लास्ट में रखना चाहिए था, सब anticipate करते. Exactly. I think second last song, and then he left, and the audience also left. But it was a good gig. It was a big metal gig. था बड़ा था. So coming back to Pakistani. Yeah. So when you did it here, that was after you guys had kind of disbanded, right? Yeah. हमने दोबारा फिर reunite किया back in 2014, I guess. हम दोबारा we got back together. हमने कुछ re-release किए गाने. तेरी हार में गाना था, धूम का गाना था, सेकंड एल्बम का, हमने री-रिलीज किया. एंड देन वी वर परफॉर्मिंग अगेन एवरीवेयर. वो किया. उसके बाद फिर साउंड क्लैश आया. जुल्फी वाज प्रोड्यूसिंग वन साइड द शो. और फिर ये डिसाइड किया कि ओके फाइन, व्हाई डोंट वी अपेयर फॉर अली अजमत. It was a good experience. It was a good show. बहुत अरसे बाद देखा हमने कि एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड शो. And that's the last well organized show that I've been to in Karachi. Yeah, good crowd. And that's when we first met. Rehearsals भी यहाँ हुए. बिल्कुल, यहाँ पे रिहर्सल हुआ था. इस रिहर्सल की बड़ी कहानी है.
But yeah, so it was a wonderful experience. I think I looked up to Ali Azmat and the whole band Junoon all my life, and Yeah. to share the stage with him was another big box tick. yeah, exactly, because I always wanted to perform on गाना stage कौन with सा him. किया था अली अज़मत के साथ? तेरी हार हम किया था. हाँ. तेरी हार हम किया था. And he was kind enough to give me that share his stage and his Yeah. limelight with him, and Yeah. it was a difficult choice for the song, but I think it was the right choice because वो गाना था, बहुत एनर्जी है उस गाने में, और वो गाना शायद जुनून भी इग्नोर करता था गाने को. उन्होंने बहुत कम किया वो गाना, बट मुझे लगता था कि ये गाना जो है ना ये लाइव शो के लिए अमेजिंग रहेगा. So we did a great job with that. So that second coming of call, how was that? Matlab, was the feeling in the band, was the lineup the same? The lineup was the same. Lineup was the same. Main core lineup, me, Zulfi Sultan were there. Then of course session player में फिर हमारे पास options थी बहुत सारी good players हमारे. So हमने initially हम play करते थे, शायद हम कैनी के साथ play करते थे drums. Farhan was always there as in the bass department. But after वापस आने के बाद फिर I think बिलाहुती drums पे काफ़ी था. फहद खान को भी drums पे हमने किया use. फरहाद हमारे लेट फरहाद हमायूं उसके साथ भी हमने कुछ shows किए. फहद खान के साथ भी shows किए. So we got back stronger. हमारे differences थे हमारे बहुत. Because we were immature back then. We were kids. Then beach में you come with a lot of other experiences. Of course. I think we were more mature now. हम अपने differences, अपनी egos, हम काफ़ी हद तक हमारे guards गिर चुके थे. And so that's when we came back together and we thought to do this again. And it was a great experience. But in that run, you didn't think, let's make some more new music, or did you work on some new things? We actually did. हमने कुछ किया था बीच में, but I think जुल्फी की अपनी commitments थी, production की, मेरी अपनी TV commitments थी इतनी. I moved to Karachi, so we couldn't really find time to sit down together and really speed up that process. But maybe it might come at some point. Of course, we already have a few things that we have actually written, and we have that. So yes, it's pretty much there. I think it's all about time and availability, and when we find time, and we will do this again. Of course, it's ये book अभी बंद नहीं हुई. Nice. I also noticed कि आप cricket भी बड़ा खेलते हैं. हाँ बिल्कुल. तो वो भी एक बचपन का शौक है, I'm sure. बचपन का ही शौक था. क्रिकेट हर किसी को पसंद है पाकिस्तान में. It's like हमारी तो हॉकी है हमारी प्राइम स्पोर्ट, बट नो, क्रिकेट इज हमारी प्राइम स्पोर्ट. क्रिकेट ही है in terms of popularity. And of course बचपन में बहुत खेली. गली गुच्चों में बहुत खेली, सड़कों में बहुत खेली. But I think professionally, hard ball cricket I started playing in Karachi when I moved here. Pretty late then. Pretty late, yeah. I think 2000, maybe like 4-5 years ago. DHA Phase 8 में कराची में मोइन खान क्लब, क्रिकेट क्लब, वो मैंने ज्वाइन किया. तो वहाँ से फिर हार्ड बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया. फिर उसमें फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया. बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया. तो वो were you mainly a batter, bowler, both? I wanted to be a bowler. I wanted to be a bowler because मुझे वो थ्रिल ज़्यादा एक्साइट करती थी to just run into a pitch and blow stumps. Yeah, exactly. So मुझे वो था, वही ना, बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना है, बड़ी फील्ड पे परफॉर्म करना है. I think it's that same instinct. I wanted to just own the whole ground. And वो तभी होती थी जब आप रन अप से भाग के आओ और बॉल ठाक मारो अंदर. So मुझे ये था. In the process I injured myself a lot, but I think that was just part of the process. I think when my body went through a lot of changes since then. और मैंने अपने आप को ट्यून किया उस लिहाज से. और उसके ये हो गया कि फिर हम सेमी प्रोफेशनली खेलना भी शुरू हो गए. अब तो there's some match happening every weekend. There's one happening tomorrow as well in मोइन खान. So डे मैचेस भी होते हैं, नाइट क्रिकेट भी होती है, टूर्नामेंट्स भी होते हैं. पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स हैं, पाकिस्तान से बाहर लीग्स होती हैं. So it's kind of become a side business as well.
प्लस ये कि शुगल भी होता है बहुत, लड़कों के साथ बॉयज़ के साथ हैंग आउट करने का बहुत कम टाइम मिलता है हमें इन आवर लाइन ऑफ वर्क, बट this is where we men just get together and have fun. It's like an all boys gang. Yeah. And it's important. It's another side of yourself that you need to express. Oh yes. It's a all boys gang club होता है हमारा, जो हम travel करते हैं, and it's fun. It's fun. So I think वो cricket भी साथ हो रही होती है, and आपस में हल्ला गुल्ला भी हो रहा होता है, and I think it's a good sport to be a part of. Yeah, always. I mean, I'm a huge cricket lover. So, फिर couple of years ago we did a track with you as well with Faraz Bhai. Yes, exactly. So share about from your perspective that experience. जीने का चस्का मैं बहुत टाइम से लेके बैठा हुआ था अपने पास, one of my solo tracks, और बहुत टाइम से लेके बैठा हुआ था. इनिशियली समी ने कंपोज किया था, और मुझे था कि अच्छा ये ट्रैक है, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था, उसकी ना ट्रू फील नहीं आ रही थी. मैंने 2-3 और प्रोड्यूसर से भी ये गाना बजवाया, बट मुझे उसकी एसेंस ना समझ नहीं आ रही थी. लाइक इट्स नॉट देयर. So I think that's when I reached you guys. And I met you guys, and then you and us, and I think we I guess Zara suggested us to you. Yes, बिल्कुल हाँ. और shout out to her. Zara ने काफ़ी लोगों से मिलाया मुझे, स्पेशली दिस फील जस्ट लाइक यू गाइस, एंड वो जब फिर मुझे पता चला, जब आप यू गाइस गॉट इन्वॉल्वड एंड देन फराज गॉट इन्वॉल्वड, एंड जब चीज़ बनी, आई वाज लाइक ओके यस, दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ द सॉन्ग. Faraz did a great job. Faraz did a wonderful job. maybe फराज के भी टेस्ट का शायद ना हो गाना, maybe, but for Faraz being a part of that track, मेरे लिहाज से, I mean, he did a really professional job, because it isn't his genre. He's into much more technical and heavier rock. Exactly. But this is like straight up kind of feel good. बिल्कुल हाँ. But I think इस फराज से पहले मुझे वो फील मिल ही नहीं रही थी इस गाने की. And when he came into the scene, और जब when you guys produced the track, तब मुझे गाने की फील आई. I was like, okay, now is the time to release the track, because so मुझे था गाने मेरे लिए हमेशा ना बड़े क्लोज रहे हैं. मुझे जब गाना समझ नहीं आता ना कि यार ये इस गाने की फील आ नहीं रही, मैं उसको लेके बैठा रहता हूँ, मैंने नहीं रिलीज करता. But I think when the song actually went through your label, your studio, तब उस गाने का मजा आया, and then तब उसको रिलीज किया, and the song did really well actually. The Pakola video did really well as well. बिल्कुल हाँ. That video was done very well by Sadiq ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, और I was happy कि यार okay, I did justice to this track. It was a good fun experience. Oh yes. So coming up this year 2024, what can we expect from Junaid Khan? A TV, there's a project being shot for Geo Entertainment. एक चल रहा है already, हम TV पे निजात, that is getting great reviews. There's one more shooting for Geo Entertainment, वो चल रहा है. Musically, I just shot a music video in LA. Nice. और it's a collaboration, me and this wonderful musician from Vegas, Lazarus. So what kind of genre is he into? He's into rap, and we talk rap as well. But he was introduced me by Fakhri Alam. Fakhri Alam, we and Fakhri Alam were on tour. हम क्रिकेट के टूर में थे, एंड फ़खर भाई सेट कि यार ये सुनो कि ये पाकिस्तानी बंदा है, लेकिन he's does great rap, and इसका क्या म्यूज़िक है. मैंने सुना, I was like wow, it's actually pretty good. मैं भी आहिस्ता से मेरी भी लिसनिंग भी रैप की तरफ थोड़ी बढ़ रही है, मैं भी एक्सपैंड हो रही है. I was like, I would love to have him as a part of one of my tracks. So एक ट्रैक मैंने अब रेडी किया हुआ था, पहचान गया टाइटल ट्रैक है, and I sent him the track. I was like, why don't you add something in this? It was not his genre, but what he did with the track was phenomenal. He actually taken my track to a next level. Nice. And I arranged the track here in Pakistan, and then he did his vocal parts there, and then मेरे पुराने TV के दोस्त, one of Pakistan's big directors, Sayyid Ali Reza Osama, he had already moved to LA,
सो उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो ही सेड कि कोई भी गाना हो जो करना हो मुझे बताना है, आई वुड लव टू शूट इट इन LA. सो मेरा ऑलरेडी प्लान था, कनाडा का मेरा शो था, सो कनाडा से न्यूयॉर्क में जाना था मुझे, न्यूयॉर्क में इवेंट था, वहाँ से फिर आई Yeah. प्लान अ ट्रिप टू LA. Yeah. And we shot a music video there. So that track is next. It's not a typical love song. It's actually quite the contrary, but Yeah. but Hate song. lekin it's an emotion that we all can relate to, and we have all been through Yeah. that Bilkul. emotion, and I just wanted to let it out. Yeah. It's a wonderful track, and I really मुझे बहुत feel करता हूँ. It's a track that I really like. Yeah. So around when do you think that's going to come out? We planning to release it around the 14th of Feb. Okay. The Love Day. Nice. So yeah, so that is next, and I'm really excited about it. I'm really really excited about putting it out to the world because Yeah. it will be a different track, Yeah. something that people haven't heard before. Yeah. Well, good luck with that, and it's been wonderful chatting with you and Same here. going through the memory Yeah, lane yeah, and man. everything. बहुत सी पुरानी यादें मेरे भी flashback मेरे दिमाग में भी आया, but I'm glad that I could share it with you. Yeah, and inshallah हम भी कुछ और नया करते हैं. For हमें sure. भी टाइम हो गया. For sure, of course. हम रहते ही पास हैं तो. Yeah, exactly. So of course, yeah. Hope you guys enjoy it, and please drop your comments, share the video if you liked it, and we'll see you next time, inshallah. Thank you.